Hello student, I'm a Dr. Sameer Asoki. Today we will discuss the unit 3rd, the topic urinary tract infection and chemical classification of anti-infective agents. Means UTI infections के बारे में हम पढ़ेंगे और जो ड्रग्स इस इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं, ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. Urinary tract infections are most common microbial infection in any part of urinary system like kidneys, ureters, bladders or urethra. UTI causes nearly 1 lakh patient hospitalization every year. There are several microbes causing these opportunistic infection due to unhygienic condition. UTI include urethritis, cystitis and pyelonephritis. जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में आप देखिए किडनी, यूरेटर, दिस और ब्लैडर. तो जो टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, तो यूरिनरी सिस्टम में ये 4 पार्ट इंक्लूडेड होते हैं: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो इन्फ्लेमेशन और अदर टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलती हैं. तो ऐसे पार्ट, जो पार्ट हमारे सामने दिख रहे हैं, जैसे ईच टाइप ऑफ यूटीआई में रिजल्ट इन मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. तो जैसे अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है. और इसमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं, अपर बैक एंड साइड पेन होगा, हाई फीवर हो सकता है, शेकिंग एंड चिलिंग होगी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग. अगर ब्लेडर में इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, तो इस केस में क्या होगा? पेल्विक प्रेशर, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज प्रेशर, मतलब पीछे की साइड में पेल्विक प्रेशर रहेगा. लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट. ठीक है. फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होगा और ब्लड भी आ सकता है यूरिन में. तो ये इसके साइन सिम्टम है. यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस. तो बर्निंग विद यूरिनेशन, यूरिन के टाइम पे बर्निंग होगी. और डिस्चार्ज, मतलब यूरिनेशन डिस्चार्ज के टाइम में बर्निंग दिखाई. किडनी और किडनी स्टोन. नेक्स्ट कॉजेज: irritation from tight slacks, nylon underwear or sexual intercourse, poor hygienic. The next cause is tube placed to drain urine. These are the causes of UTI. Now the signs of UTI. Number one, what are the signs? Burning or passing urine, having to pass urine suddenly or often. Next sign is blood in urea, blood in urine. That is urine that is bloody, cloudy or has a strong odor. The next sign is pain in the lower back. The next sign, feeling tired or not feeling well. These are the signs of UTI. Now the things to do. हमें क्या क्या करना चाहिए? Tell your doctors your sign, your treatment may include. हमें क्या क्या करना चाहिए? Drinking at least 8 glasses of water
each day. Avoid caffeine containing drinks like coffee, tea, and cold drinks. The next things to do: take proper medicine and all the antibiotic as prescribed. If you don't take all of the medicine, your infection may be returned or worse. Ways to prevent UTI: कौन कौन सी ways है जिससे हम prevent कर सकते हैं? Keep your genital area clean. Take showers instead of tub bath. Empty your bladder every few hours even if you do not feel full. Women should always wipe from front to back after going to the toilet. The next, wear cotton underwear and loose pants. Drink 8 liquids a day, including liquids that are high in vitamin C, such as orange and cranberry. Avoid alcohol and food and drinks with caffeine. Have any sign or UTI, have nausea or vomiting, have back pain, have problems with your medicines, do not improve with treatment in 48 hours, or your sign or worse in 24 hours. If you have any of the above, consult. Let's see the chemical classification of urinary tract anti-infective agents. जैसे कि सिलेबस में मेंशन है कि आपकी जो यूटीआई में जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यूज किए जाते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी इज क्यूनोलोन्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज क्यूनोलोन्स. तो क्यूनोलोन्स क्या होती है? क्यूनोलोन्स का रिंग आप देखें, स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलोन्स. तो क्यूनोलोन एंटीबायोटिक इज a member of large group of broad spectrum bactericidals that share a bicyclic core structure related to the compound 4-quinolone. तो ये 4 पोजीशन पे 1 2 3 4, इस 4 पोजीशन पर आपका कीटोन ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं 4-quinolone स्ट्रक्चर. Quinolone constitute a large class of synthetic antimicrobial agents that are highly effective in the treatment of many types of infectious disease, particularly those caused by the bacteria. तो जैसे कि हम बता रहे हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, तो यानी कि इन्फेक्शन में इस एजेंट को यूज किया जाएगा जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए जा रहे हैं. तो ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्विनोलोन कैटेगरी में आती है. आपको जानना बहुत जरूरी है क्विनोलोन्स, आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट कंपाउंड इसका मतलब डिस्कवर्ड हुआ वो क्विनोलोन का, वो था नेलिडिक्सिक एसिड. इसका डिस्कशन हम आगे भी देखेंगे स्लाइड में जब हम वन बाई वन ड्रग को डिस्कस करेंगे. अभी हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं. तो पहले हम अगर डिस्कस करें क्यूनोलोन्स में ही नेलिडिक्सिक एसिड, इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट क्यूनोलोन ड्रग. It was introduced in 1962 for the treatment of UTI infection in humans. तो जैसे कि हमने बताया कि नेलिडिक्सिक एसिड इज अ क्यूनोलोन ड्रग जो कि 1962 में यूज किया गया यूटीआई इन्फेक्शन में. तो नेलिडिक्सिक एसिड इज दस कंसीडर्ड टू बी द predecessor of all member of the quinolone family, include the second, third and fourth generations commonly known as fluoroquinolones. The most important is fluoroquinolones. तो नेलिडिक्सिक एसिड से ही हमने आगे सेमी सिंथेटिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए और उन कैटेगरी को हमने कैटेगराइज किया जनरेशन वाइज और उसको बोला फ्लोरोक्विनोलोन्स. द फर्स्ट जनरेशन also include other quinolone drugs such as pipamedic acid, oxalinic acid or sinoxacin, which were introduced in 1970.
तो 1962 में सबसे पहले जो क्विनोलोन ड्रग आई वो थी नैलिडिक्सिक एसिड, और नैलिडिक्सिक एसिड एक हमारा प्रीडेसेसर थी और मेंबर्स के लिए, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए। तो फर्स्ट जनरेशन में पाइपामेटिक एसिड, ऑक्सैलिनिक एसिड और सिनॉक्सासिन। ठीक है, अब आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्विनोलोन्स को जनरेशन वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट जनरेशन, अगर हम फर्स्ट जनरेशन देखें क्विनोलोन्स में, तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में आती हैं फ्लोमाक्विन, ऑक्सोलिनिक एसिड और रोक्साक्सिन। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर हैं इनके, ये आपके सामने हैं। क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन है तो हमें इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा। सेकेंड जनरेशन देखें तो सेकेंड जनरेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसका आपने नाम भी सुना हुआ है, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ये बहुत कॉमन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। ये सेकेंड जनरेशन ड्रग्स है। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ क्विनोलोन्स, तो जिसमें आती है लीवोफ्लॉक्सासिन, जिसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रेपाफ्लॉक्सासिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, वैलोफ्लॉक्सासिन, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे हर जनरेशन में, उनके नाम के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी देने पड़ेंगे। द फोर्थ जनरेशन इज सिनाफ्लॉक्सासिन, जिसका स्ट्रक्चर है सामने दिख रहा है आपको, गैटीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये 4 जनरेशंस आपने क्विनोलोन्स के क्लासिफिकेशन में देखी। ये हमें इसका जनरल क्लासिफिकेशन है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का। ठीक है, थैंक यू।